Today we'll be working on differential equations. One of the most dominating and interesting thing. So on that note, so I will try to do it with respect to some basic things for you first, and then we'll proceed to the advanced level. So while the session is going on, you're free to ask me any questions. If EQ 31st, another month comes to an end, and we haven't done much in our lives. So differential equation कुछ ऐसा ही है, but what is the proper theory of this thing? Why we needed देखो differential equation till the class 11, 12 graduation days we used to do it कि सर ने एक ऐसा equation दिया x square and then dy dx equal to 2x and d2y dx to sometimes, or we integrate both sides, somehow we do it and we just find it. Okay, so what is the main importance of the differential equation? What is it about? Okay, is it like a derivative? Is it like something? The derivative p hai, differentiation is there, integration is there. Sometimes we just trying to find out reverse way, all these things mixed up. So my question is today, what is this differential equation is all about? But I'm not asking you the definition which is provided in the book. But what is the inherent concept of going for the differential equation and when we need it? Because at the time of examination, no one will tell you that this is a differential equation until and unless it has been mentioned. Okay, so the underlying concept, the inherent current inside in it, and under what circumstances, what are the advanced level theoretical knowledge without getting deep into the formation of the differential equation. I don't need a bookish answer into this. I need an understandability with respect to the advancement level as well. Sorry, man. So I know you guys can do it. Okay, a little bit. वो तो बाकी मैं सिखा ही दूंगा. So what is this concept? For example, people say like how a population is growing over time. Okay, that's a differential equation concept. Or they are say how the heat spread through a rod. So that's a differential concept. So what this thing? Why this thing is happening every time associated with these kind of different parameters? So first of all, अगर मान लो मेरे पास ऐसा y equal to e to the power x, I will be keep on differentiating infinite times, है ना? Why you leave it like y equal to e to the power x? एक बार करते हैं, फिर dy e to the power x dx, and we try to do it and get somehow something. Yeah, यहीं पर ही वापस है, यही ना? So first of all, who decides that how many times we differentiate? 3 बार, 4 बार. So the first is the parameter decides. जितना parameter है, that decides the number of derivatives. That's the first concept. Because in none of the cases the problem आके बोलता नहीं, hey, I am a differential equation, please solve me, use this formula. है ना? So whenever this parameter plays a very crucial role, because one of the cases, if this dot is dependent on somewhere this value, and there is no direct connection to it, that's the parametric relation. Okay. So it's just like a memory or a feedback of something which you are utilizing to find the core concept. Okay. So in physics or biology, what is the thought? So modeling, it's like a differential equation is modeling tool, just not a solution technique. It's the solution technique nahi hai, it's just like a modeling tool.
Okay. So you are finding a process by which every time you will find a solution and which follows the same scenario also. Because uh, if you're evolving on a dimension, okay, usually we can talk about time. So time, we know every time time is changing with respect to same parametric value, like every second counts, right? And the speed of second is changing. No. So here time is working as a parametric value. So we can compare the time. That's why in the beginning we say another month has gone. So we know that the respective 30 days time has gone, or 31 days in this case. Okay. So the information is what happens कि मेरे पास information है लेकिन थोड़ा partial information, direct information नहीं है मेरे पास. Okay. So in that case we use PDE, partial differential equation. So we know about the parameter, लेकिन parameter के कुछ partial cases में दिए. But if y is dependent on x and z is a function of y, then only it will happen. So it's a partial thing. We'll do it as well. Okay. And sometimes even hidden data also. Okay. Nowadays we'll be working on neural network, ये सब के ऊपर काम करते. There is a lot of hidden data inside. याद रखिएगा, suddenly you can see integration अब college और university में है. We don't have to study integration as a form. But differential equation is still there because we are working on this descriptive analysis of the changes with respect to the parametric algorithm. यही है थोड़ा बहुत the thing. So the function, what is a function दिया रहता है? This is the function is nothing but a picture of reality, and the differential equation is the movie of reality. Okay, so how many frames you are showing per minute, that shows you the movie. मूवी में क्या चलता है? 30 FPS में चलता है, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड. मतलब अगर 30 फोटोज को रखेंगे और ऐसे जाएगा तो वो लगेगा ऐसे चलते रहेगा. दैट्स अ कॉन्सेप्ट. सो हियर 30 FPS इज द पैरामीटर. अब मूवी में हम लोग जो वही मूवी आजकल फोन में आता है ना, लाइक स्पीड 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 में दिखाता है, और यू कैन डू इट स्लो मो. दे आर ओनली चेंजिंग द FPS, isn't it? Okay. So here, this is the example-based concept of the differential equation. Remember that I haven't gone into any kind of example of physics में क्या होता है, maths में क्या होता है. Enough example I've already made. Okay. So now coming to the main part. अब differential equation में सर असल में आता क्या है? What kind of thing comes first? Which most of you have done already in your class 11-12 days. वो क्या है? सबसे differential equation में जो first concept आएंगे, order and degree. Yeah, sir, up to 11-12 में वापस ले जा रहे हैं. Order degree, everyone know here, like d2i dx2 plus 5dy dx whole square equal to 16. ये नहीं पूछने वाला हूँ. So what is the order? 2, और इसके power में जो है, that is 1. So order equal to 2, degree equal to 1. You get your answer. But things become complicated when I give you, as usual. So get ready. So order and degree is actually, order is the decider then. Degree is not the decider. Order ज्यादा important है नहीं, और उसके ऊपर में जो है वो अपना डिग्री हो गया. Cool. इसमें से कोई फ्रैक्शन हो सकता है? In differential equation, can order or degree anything can be fractional? If yes, why? If no, why? But degree can be. Both are not can. तो ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव. एंड डेरिवेटिव ऐसे तो हाफ डेरिवेटिव होता है, cannot do 3.5 टाइम डेरिवेटिव. ओके. सो ऑर्डर मस्ट बी एन इंटीजर. डिग्री क्या है? पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव.
तो इस हिसाब से तो ये फ्रैक्शन हो सकता है। भाई सर मैं d2/dx को करूंगा और मैं उसके ऊपर 1.92 लिख दूंगा, आपको क्या जाता है? In college, professors, school, college, everywhere, university, people say you cannot keep it in fraction. And we have followed. That's why you have given me the answer, no. Then again, you go for the very basic and why. Then why degree must be an integer? Order is cool. We cannot do 1.5 times degree. But why degree must be an integer? सर पॉलिनोमियल ट्रीट करते हैं हम इसे इसलिए। नहीं। Okay. Degree is calculated. I am coming to that. ठीक बोल degree क्यों calculate करें? Why we need degree for the first time? So degree is calculated after making, ये किताबों का भाषा नहीं है तो ये लिख लेना, after making all derivatives free from any radicals and fractions. Okay. So if you have this radical or fractional power, then it's any fraction is just like an irrational structure is happening over. So the irrationality makes it very complicated to proceed to the next level. So I'm changing the degree to the very next level. So if I having already a half degree, then what will be the next positive degree? Is it another half? Or is it 1.5? Sorry, 1.5. It's pretty hard to decide to get it to the next level. That's why the radicalism is problem. Okay. So if I get 5, the next step is obviously 6. But if I am at 5.25, what will be the next step? 5.5. ठीक है? नहीं बोला नहीं सर मैं तो 5.75 ले रहा हूँ. Okay. So this is the thing that the problematic idea or the final verdict, no, order or degree in the classical differential equation cannot be fraction. That's the answer. अब दो चार क्वेश्चन करते हैं. इसके लिए I always prefer to go for राय सिंघानिया का किताब, बहुत ही अच्छा किताब है. आपके पास नहीं है तो मुझसे ले लीजिएगा. मेरे पास एक ही नहीं होती, बोल रहा हूँ फिर देखा जाएगा मेरे पास एक नहीं. When it be the next part? इसके बाद का a similar kind of thing happens into statistics also in case of this kind of thing. 20 to 30, 30 to 40. तो जिसको 20 मार्क्स मिला वो कहाँ जाएगा? Where will you put it? They have their solution. उन्होंने एक रूल बनाया, ठीक है, क्लास बाउंड्री क्लास इंटरवल चेंज करके. But in real life again you still have that issue, है ना? Or what happens in a star rating? Star rating in a newspaper of a movie, जैसे सैयारा. सैयारा को मिल रहा है हमारा एक 4 स्टार out of 5. This is cool. थोड़ा सा और अच्छा मूवी होता तो कितना स्टार मिलता? 4.5 और 5 और 4.25 भी है. We don't know. IMDb rating, International Movie Database rating, ठीक है? DB. So International Movie Database rating में everyone can give the rating. Okay. तो वहां पर में you see that there may be a 6.4.
There may be a 6.99 as a, there in general users are a single digit. ये 6.9 कैसे आया? We know that's an average. And in order to improve it, so many people come voted, and then maybe it becomes 7. But in this case, if you don't know, आपको लग रहा है 4 है, इससे अच्छा मूवी में देख रहा हूँ, मतलब 5 out of 5, you are confused about it. That's the main issue of a fractional power usage in case of classical. आप बोलो classical का मतलब क्या है? What is the meaning of this classical differential equation is all about? So it's a classical rating system which everyone follows. अगर मैं कहता हूँ 5 में से 2 मिला, it's a bad movie. It's a classical pre-decided system. If a movie got 4 out of 5, it's supposed to be a good movie. In IMDb, I'm following IMDb for the past 15-20 years. तो मैं जानता हूँ IMDb में बहुत पहले अगर मूवी आता है, you know, I'm telling you a story of a movie called John Wick 4. ठीक है? This movie released, I got it the original print on the very that day. So मेरा नहीं, I'm going to Nepal. I'm going to see it in Nepal. Okay, so I stopped myself for 2 days. So मेरे phone में भी है. It was already in the phone, and then I deleted it. So anyway, when the movie came, it came with a rating of 9.1. And the first few days, for n number of weeks, it's still at 8, 8.5. And then if you see it right now, it's at 7.4, almost like after 1.5 years. So many people have voted, and after a certain point of time, it's losing. Okay. So this is the parametric analysis of this thing of a bigger data. ठीक है, अब और ऑर्डर डिग्री के अंदर में नहीं जाते, अब थोड़ा कन्वेंशनल चीजों में करते हैं जो एग्जाम में आने वाला है, बट ये भी उतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा रुलाने वाला क्वेश्चन ही दूंगा इवन इन केस ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री. इस इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री फटाफट निकालिए. You know, many of the people are saying that why this सैयारा मूवी देख के लोग इतना रो क्यों रहे, people are so idiot and all. मैं तो बोलता हूँ मैं बहुत खुश होता हूँ भाई, कुछ तो अभी भी लोगों के अंदर फीलिंग बचा हुआ है, but people are crying after seeing a movie. मूवी कैसा भी हो, okay, that doesn't matter to me. कितना रेटिंग मिला doesn't matter to me, but people are talking about something which is a relatively good thing. Okay, and my personal take on this movie is that a normal boy is becoming a famous singer. ये story हमेशा इंडिया में चलती है. And the second thing is that he falls in love with a girl who almost at the verge of dying and still is not falling for someone else. And this is a story of the very big shot good singers also. Okay, so बड़े लोग क्या होते हैं, जितने बड़े होते रहते हैं, they find it lonely. Okay, क्योंकि सब लोग अपने फायदे के लिए उसके पास घूम रहे हैं. And suddenly you go for, जैसे you get to Mike Tyson अभी भी वही लोगों के साथ घूमते जो उसके स्कूल लेवल में ये सब में बेकार टाइप, they don't do anything. सब माइक टाइसन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, बट नहीं, ये मेरे साथ रहेंगे. सेम थिंग हैपेंस विद द अदर बिग शॉट. ओके, सो you guys can watch it, but I personally, अगर मुझे पूछोगे, I personally don't like the hero. शुरुआत से इतना इसका नेगेटिव एटीट्यूड है ना, हीरो कम लगता है, गुंडा ज्यादा लगता है, लड़की एकदम बहुत अच्छी. ओके, so you guys have seen the movie? कितने लोगों ने देखा है भाई? चलो मैं मान लेता हूँ सभी ने देखा. What stuff? Why Corny? আমরা অনলাইনে দেখতে গেছি, আমি একটা কোন জুরাসিক পার্ক, তার টিকিটটা লাগিয়ে দেখছি, মানে Jurassic Park is still going on, halls? কাকু কাকিমার বয়সে অনেক বড়. Come and watch it. No, it's not for like going for a movie or why this is happening, bullshit and around. But the thing is that someone is still happening in a positive way, because before the
things getting into a destructive way, I think this is good. देखो animal देखने से तो अच्छा. Okay. So in this case, what is the order and degree? फटाफट बोलिए. Order 1 degree 5. Order 1 degree 5. ठीक है, एक आंसर आया. So थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा ना. So dy dx minus 6x and ay plus bx and dy dx whole to the power 3/2 equal to 1. ठीक लिखा क्या नहीं? रिवर्स से नीचे लाओ, क्रॉस कर दो, झमेला खत्म. देन क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो. स्क्वायर बोथ साइड. तुम जितना जल्दी बोला है मुझे नहीं लगता ये आंसर है. लेट्स सी. स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा? ए स्क्वायर dy dx का स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा? 12x इंटू dy dx प्लस 36x स्क्वायर. ये पहला टर्म आ गया भाई. सेकेंड टर्म क्या होगा? ए स्क्वायर. अच्छा थर्ड है, सो ये ऐसे भी स्क्वायर में उड़ जाएगा. तो क्या होगा? ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू. क्लियर? दोनों हम लोग का हो गया. नाउ यू कैन गेट ऑर्डर एंड डिग्री. तो ऑर्डर कितना है भाई? 1. डिग्री कितना है? डिग्री कितना है? ध्यान से देखिए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहीं पर ही सम खत्म नहीं होता. दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज, अरे दिस इज अनदर पार्ट. तो यहां पर एक टर्म तो ऐसा आएगा d2 by dx2 इंटू d2 by dx3. तो पूरा अगर सुंदर से सजा के लिखेंगे तो एक टर्म ऐसा आएगा जिसके ऊपर लिखा है dy dx होल टू द पावर 5. So that's why degree in this case is 5. मतलब यहां पर देखने पर भी 50% स्टूडेंट लोग इसका आंसर लेंगे 1 and 3. जो आंसर दिया था तुमने 1 और 5 दिया था कि 1 और 3 बोला था? 5 ही बोले. चलो ठीक है, बढ़िया है भाई. पहले किया हुआ है क्या ये? इतना जल्दी आंसर दिया है तो बहुत कठिन काम था इतना जल्दी आंसर. ओके. Many of the cases my students tell me that, sir, why you do it all the full calculations? Because in these kind of sums you don't know in the middle में कोई भी एक टर्म ऐसा निकल सकता है जिसकी वजह से चीजें बदल सकती. और एग्जामिनेशन टेंशन में I always prefer to go for a full analysis. ओके, शॉर्टकट उसी में ही कीजिए जिस क्वेश्चन में आप कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है. एग्जैक्टली किए, बाकी क्वेश्चन आपको बचाएंगे नहीं मार पाए. No, I'm not saying don't use trick. If you are confident enough, for factorial cases, how to find the factorial and all, how many zeros are there, this is like a trick, you know. But in these kind of cases, it is not dependent on the trick. The higher mathematics is dependent on the concept.
और कॉन्सेप्ट के साथ साथ और भी काफी कुछ चीजें हैं एंड अ लिटिल बिट ऑफ हाई लेवल कैलकुलेशन। ये जो इसको दो पार्ट में तोड़ना है, ये करना है, एंड इट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट टफर क्वेश्चन अगर मैं इसी को ही 2 में बना देता, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आई कुड हैव गिवन। लेकिन उससे सब में क्या होता है, यू आर ओनली फोकस्ड ऑन द सेकंड ऑर्डर, बट दिस टाइम एवरीथिंग इज अ फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर तो पक्का है, डिग्री ही में। और सेकेंड सवाल ये भी आ सकता है, व्हाट हैपेंस इफ आई मल्टीप्लाई इफ देयर इज अ dy dx whole square, if there is a dy dx whole cube, which one I should take? Sir has told that always go for the highest order, but if there are multiple same ordered things in a structure, then which degree to take? Then the highest degree will take. Okay, yes or no? जैसे मान लो आइसक्रीम के दुकानों में जाके हम लोग बचपन में करते, तो आइसक्रीम के लिए बजट कितना है, 5 रुपए, ठीक है। सारे फ्लेवर्स ऐसे ही हैं। अब सारे फ्लेवरों में चॉकलेट तक बहुत हाई फाई फ्लेवर माना जाता है, बड़े लोगों का फ्लेवर, इसका दाम 7-8 रुपए होगा। और गरीबों का फ्लेवर का नाम क्या है, कौन सा? वनीला, एकदम। दिस इज अ क्लासिकल थिंग। देखो ये जो आंसर अभी आप लोगों से आया, दिस इज कॉल्ड क्लासिकल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो थ्रू आउट द वर्ल्ड मैंने दुनिया पूरा तो नहीं देखा, लेकिन बहुत सारा कॉन्टिनेंट घूम चुका हूँ, तो ज्यादा हैवी नहीं, व्हाटएवर, तो 2-3-4 दिया। सो 3 जगह में जाने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि एवरीवेयर, इवन इन द बेन एंड जेरीज ओरिजिनल, वहां पर वैनिला एकदम मिलता ही नहीं। हाई फाई नो सर, डोंट सेल दैट। दे पुट इट लाइक अ चॉकलेट वैनिला, चॉकलेट इज वैनिला, और लाइक वैनिला विथ ओरियो। सिर्फ वैनिला का डिमांड का ही नहीं। सो हाँ, वैनिला विथ नट्स, कुछ तो डाल दो, वैनिला का थोड़ा लेवल तो बढ़े। सो व्हाई वैनिला हैज बिकम लाइक दैट? सफेद, ये सबसे कम नाम वाला, व्हाटएवर। सो नाउ एवरीवन इज प्राइस। और इसके बाद आता है इसका बहन, उसका नाम था 2-in-1। और ये 2-in-1 में कुछ भी दे सकता था, चॉकलेट विद वैनिला दे सकता था, नहीं, उसमें भी इन लोगों को देना है स्ट्रॉबेरी। ये दूसरा सबसे कचरा था। नो वन यूज्ड, कोई स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ऑर्डर करता था, स्ट्रॉबेरी क्यों खाना? Everyone like all the flavors, but when it comes to the comparison of a kid in his mind कि 5 रुपए में मुझे चॉकलेट मिल रहा है, मतलब कुछ आइसक्रीम के फ्लेवर से, लाइक क्वालिटी वाज एंड ऑल, दे आर ओनली सेलिंग 5 रुपए में ये दोनों, बाकी सब बड़े लोगों का ब्रांड है 15-20 रुपए, वो तो औकात के बाहर, छोड़ो। And there was like one local brand, this was named as Vadila. ये वैसे यहाँ का नहीं था, बाद में मुझे पता चला वदीलाल इज एक्चुअली फ्रॉम गुजरात। कि वदीलाल वाला क्या आता था, इन लोगों का चॉकलेट, ये वनीला, और तब ये बटरस्कॉच फटरस्कॉच उतना नहीं चलता, इन लोगों का एक फ्रूट एंड नट, सॉरी टूटी फ्रूटी का फ्लेवर आता, और ये चारों ही 5 रुपए में आते। तो व्हेन द थिंग्स आर अवेलेबल एट द सेम लेवल, तो कौन ये सब गरीबों का ब्रांड खाएगा? लेट्स गो फॉर द बड़े लोगों वाला फ्लेवर। सो वनीलाल वाला जब आइसक्रीम और लेके आता था, उसके पास कभी भी सेम नंबर ऑफ आइसक्रीम होते ही नहीं थे। गेटिंग माय लॉजिक? मतलब वो कभी भी 10 वनीला, 10 ये 10 वो, ऐसा नहीं लाता। वो लाता था 2 वनीला, 2 स्ट्रॉबेरी, बाकी सब चॉकलेट, ये वही बिकने वाला है। ओके, सेम थिंग हैपेंस इन द शू मेकिंग इंडस्ट्री। इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन का काफी इस्तेमाल होता है। जब लड़कों का होता है उसमें 5 या 6 नंबर का जूता बनता ही नहीं। ओके, 8 सबसे कॉमन सेल होने वाले हैं, ठीक है। और जब लड़कियों का जूता है तब 9-10 बनते नहीं, वहां पर सबसे कॉमन है 6 नंबर, इंडिया के हिसाब से। सो दिस इज द क्लासिकल मोड ऑफ वर्किंग विथ हाउ मेनी शूज विल यू प्रोड्यूस। देखो जूता तो ऐसा नहीं है, दुकान में जाके बोले ओके ठीक है मुझे 6 नंबर चाहिए, नहीं मिलेगा 7 नंबर ले लीजिए, मैनेज हो जाएगा, ऐसे वी कांट डू इट लाइक दिस। सो यू हैव टू प्रोड्यूस into this entire system and on that basis you will produce, ठीक है। ये आप लोग भूल जाएंगे, इसीलिए वदीलाल वाला एग्जांपल याद रखिए। अगर सबका दाम 5 रुपए हो तो चॉकलेट ही खाना है, और आपको सच नहीं लग रहा है
this is one of my student get paid around 4 से 4.5 लाख रुपए उसे मिलता है ऐसे जगह में ज्ञान देने के लिए, ठीक है. और he comes with a very unique example जिसके लिए he got कुछ एक अवार्ड भी मिला था, but this example was very nice. तो देखो जब क्वालिटी वर्ल्ड्स ने 100 रुपए वाला क्या बोलते हैं आइसक्रीम लॉन्च किया, क्या नाम था उसका? इट्स मैग्नम. तुम लोगों ने एक चीज गौर किया है, मैग्नम का सारा फ्लेवर कौन से फ्लेवर में आता है? ऑल ऑरेंज. नाम दिया है ब्राउनी, ओके, नाम दिया है ब्राउनी, नाम दिया है ये बेल्जियम डार्क ये वो, लेकिन है वो चॉकलेट दिखने से बाहर. नो वन डेयर्स टू पुट अ वैनिला इन द मैग्नम. अरे वो अंदर रहता होगा और उसका भी दाम 20 रुपए कम है, 80 रुपए में मिलता है, ठीक है. अभी तो रोज दाम चेंज हो रहा है, आई कैन नॉट कंपेयर विद द प्राइस थिंग अभी, बट द थिंग इज दैट वो 20 रुपए कम है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बोलते अरे अंदर में ये सफेद है. Actually, I was disappointed when I invested 90 rupees and got the vanilla thing inside. Yeah, everyone get disappointed, but हम लोग को cheat कर रहा है. So almost they are making it the same thing, but you feel cheated, isn't it? Yeah. You take that. No, my mom also don't like. She is only chocolate. ठीक है, नहीं खाएंगे कुछ भी चॉकलेट के बिना. Okay, this is called a social thinking. Okay, so we have been taught in this way like the chocolate is quite sophisticated. So that's why if you wear a white, if you wear a black, so the black person comes, wackiness. The white cannot compete with that. So white is like simple, sober, sophisticated when it comes to the dresses. So super costly dress in generally comes in dark colors. In general. Okay. You can't sell a yellow dress at a very costly price. And when it comes to the very large brands, Mercedes and all, कुछ भी ad में देखो कभी देखा लाल कलर का Mercedes बहुत बिक रहा है. It always comes in what color? Black. Okay. And in general, the black cars are costly. क्योंकि black बनाने में कुछ extra लगता है क्या? मुझे नहीं लगता कुछ extra लगता है क्या? Okay. So next is this equation. This is a very another one. dx2y, d2y, dx2, 6. Okay, one of my student has got a point here. तो आप लोगों में से किसी ने एक पॉइंट में लिखा है सर, is it like the cocoa is priced very high, that's why it is very means people liking it? Answer is definitely no. Again, you need a statistical survey. जैसे मान लो मामा मिया का आइसक्रीम 250 रुपए में कोई भी फ्लेवर ले लो, 250 and you go for any flavor. पिस्ताचियो भी उसी में आ रहा है और उसी में ही चॉकलेट और उसी में ही वैनिला. It's actually a essence of the flavor only matters. वो लोग कहाँ ओरिजिनल डालने वाले हैं? देन तो सभी का प्राइस अलग होता है ना. जल्दी बताइए इसका क्या होगा? ऑर्डर एंड डिग्री अगेन. एनीवन? चलो कोशिश करो. Degree 2, order 4. ओके.
डिग्री 2 ऑर्डर 4। नहीं सर, जल्दी निकाल दिया, दोबारा निकाल रहा हूँ। देखो ऑर्डर तो देखने से ही पता चल रहा है 4 ही होगा, है ना? हाँ, ऑर्डर सही था। डिग्री मैटर्स। चार कैसे होगा? d2y dx2 I am doing it of dy dx, d2y dx2 of d2y dx2। तो दो बार करने से ये तो बिना देखे ऑर्डर में ऐसे ही 4 बोल सकता हूँ। सो सर ऑर्डर डिग्री नॉट डिफाइंड आएगा क्या इसमें? नो, मुझे क्या पता क्या आएगा, मेरे पास सवाल है, मैंने दे दिया। अब हमें करना है इसे। ऑर्डर 4 डिग्री 2। अच्छा चलिए, ये भी एक आंसर आ गया। ठीक है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। फोर्थ ऑर्डर इफ यू आर नॉट श्योर अगेन, सो दिस पार्ट इफ आई रिमूव, ध्यान से देखिए, इसको अगर सिर्फ इक्वल टू कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? बोथ साइड में होल क्यूब कर देंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा। सो दिस इज माय डन एंड इट विल लेफ्ट आउट विथ d2y dx2 of d2y dx2 whole with the square. So whatever it is, कुछ तो आता रहेगा, कुछ तो आता रहेगा, and then definitely I get a order 4। डिग्री आया कुछ? Answer is degree cannot be defined because the fractions cannot be removed. If you getting into this, सिर्फ देखने से मैं बता सकता हूँ, आप लोग कोशिश करने के बाद ही पता चले, फर्स्ट टाइम के बाद। इसके बाद और करेंगे तो पावर और भी चेंज होता जा रहा है, फ्रैक्शन आर बिकमिंग मच लेसर फ्रैक्शंस। As a result of that, in this case, order is 4, but degree is in fraction. So that's why, according to CDE, classical differential equation, degree cannot be defined. Okay? तो हमेशा वैल्यू आएगा ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, ये सवाल को बिना किए कौन बोल सकता है कि ऑर्डर एंड डिग्री कितना है? बताइए। ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर तो क्लियर है, थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर तो पूछ ही नहीं रहा हूं। डिग्री, हु कैन टेल मी? डिग्री 9 होगा सर। एक आंसर है 9, एंड एनीवन एल्स विद अ डिफरेंट आंसर? देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ बिना किए भी पता जा सकता, ये ऐसे जाएगा तो ये एक माइनस हो गया, ठीक है, ये खत्म, एंड दिस इज गॉन। सो इन ऑर्डर टू चेंज इट, इसमें पावर में 3 है, इसमें 2 है, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6। दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2/3 into 6
ध्यान से देखो 2/3 into 6, 3/2 into 6, ये हुआ तो 3 3 जा 9, ये क्या तो 4, ये 4 और 9 में से किसको लेंगे भाई? 9, वही वनीला और चॉकलेट, है ना? ठीक, এটা একটা অপশন ছিল যদি d3 not equal to 0 হয় তাহলে তো হবে কোনটা? d3y dx3 is equal to 0 d3y by dx এটা দেওয়া আছে হ্যাঁ, যদি 0 হয় তাহলে কি এটা অর্ডার হবে? तो जीरो होने तो যাচ্ছে ही ना, then it's a quadratic equation में, तब तो थर्ड ऑर्डर जाएगा ही। So the nature of the equation, अच्छा पहले आंसर में इंटरव्यू लेवल में क्या बोलना है? So for this particular nature of equation, it is not possible to find the degree. We can find it if we change the nature of the equation. यहाँ पर nature क्या है? It's a quadratic equation. तुम अगर बोल रहे हो थर्ड ऑर्डर है ही नहीं, it's quadratic, or maybe a linear. तुम थर्ड क्या nth ऑर्डर में लिख दोगे, क्या फर्क पड़ता है? That's the zero thing. But here in this case, degree will be 9. अब इसमें सोचो, तुम लोग सिर्फ देख के बोलना कितना मुश्किल है। Even I didn't manage to say it. ठीक है? Because here is you have to take the LCM, you have to do it, 1 or 2 steps you have to do. ठीक है? पूरा करने का जरूरत नहीं। So, but remember that if it's like 2/3 equal to 3/2, so कुछ ना करो तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 equal to 9. Whatever is the higher, that is the thing. Okay? So now let's get into another order and degree. The order degree इतना करा रहा हूँ क्योंकि order degree के ऊपर associated काफी questions आते हैं and people just can't do it. और इसके बाद तो मैं पूरा differential वाला पार्ट ही जाऊंगा. I think Ovikian has done it, but he has missed out this zone, right? To getting deep into the order degree. Directly, yeah, homogeneous ये normal convex देखो. हर मैं अपने हमेशा टीचरों को ही मैं बोलता रहता हूँ, so you follow the way you like to do it. और मैं हमेशा क्या करता हूँ, I try to make every class a little bit unconventional. पिछले बार का अगर मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे मैं अलग तरीके से पढ़ा है, उससे पिछले बार का अलग से, दैट्स व्हाई आप लोगों के पास B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 भी है, और अभी डिजाइन हो रहा है B0. B0 में सभी कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में बेसिक से लेके एडवांस तक सारा कुछ दिया हुआ है। किसी को उतना नहीं देखना है वो इतना देखेगा। So there are options. लेकिन हर एक क्लास is not a homogeneous class. Means the class standard, the other things, the likings, the math, the pattern, the way of the doing is completely not the same. So that's why it is expected that a pupil or a student should be understanding that, because it's a human thing. और उसी के हिसाब से उसे आगे भी बढ़ना है। ये जीरो पूछ रहा था, चलो इसको मैं जीरो बना। ऑर्डर डिग्री क्या होगा फटाफट? ये उतना कहना आसान नहीं होगा। देखते सबसे पहले कौन जवाब देता। वैसे ऑर्डर क्या होगा इसका? एनी आइडिया? ऑर्डर तो 4 ही होगा सर। ऑर्डर तो 4 ही होगा। ये वो इतना आसानी से क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये माइनस में, यही अगर प्लस में रहता तो तभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, बिकॉज दिस पावर हैज नथिंग टू डू विद दिस पार्ट। तो ये 2 है, 2 के साथ आना है, सो ऑर्डर अगेन वेरी इजीली 4। डिग्री गड़बड़ाएगा यहाँ ना, डिग्री 3। डिग्री 2 ही आएगा सर, 2 ही आना चाहिए। 3 आया, 2 आया, चलो दोनों ही गलत है। इतना आसान नहीं है इस बार डिग्री निकालना। अरे तो 2 बार डेरिवेटिव कर करके देखना पड़ेगा। जैसे डबल डेरिवेटिव, सो फर्स्ट वन इफ यू डू इट ddx of then d2y dx2 of minus 3/2 of equal to 0, है ना? So you create yourself into a pressure cooker situation, तभी आपके पास बहुत सारा आइडियाज आते हैं। ओके, मतलब किसी दिन अगर आपको 5 किलोमीटर चल के बारिश के अंदर जाना है तो आपको लगेगा घर में मेरा इतना सारा काम बाकी है, like that you find those things। यहाँ भी वही करेंगे। So first order derivative comes in minus 3/2 ddx of
d2y dx2 comes in with a minus 5 by 2, that is d3y dx3, फिर है ना, फिर -3/2 माइनस, देखो ये थोड़ा गड़बड़ भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बट हम लोग का लेजी दिमाग जो यूट्यूब रील देख देख के ऐसे भी खत्म हो चुका है, तो वो ये सम देख के डर जाता है, इतना कौन करेगा, यहाँ पे तो करना है d3y dx3 होल स्क्वायर d2y dx2 -5/2, दिस इज इक्वल टू 0। सो 5 के हिसाब से -3/2 ये दोनों के हिसाब से जाएगा, सो 5/2 तो ध्यान से देखने पर देखो d4y dx4 अकेला बन गया, इसके साथ कुछ है क्या? This part has nothing to do, you can leave a fraction over here. So in this case the final value will be 5 d3y dx3 whole square. ये कैसे आया समझ में आया है ना? And चलो ऐसा d2y dx2 d4y dx4, तो क्या आया? डिग्री इज 1 और चले गए दिखे चले गेटिंग द लॉजिक। इसमें 2-3 स्टेप तक करना है, थोड़ा सा ज्यादा जो एडवांस लेवल स्टूडेंट होता है वो कम से कम इस स्टेप से समझ में उसे आने लगता है कि इसके बाद तो और करने का जरूरत है, ठीक है, वैसे भी और कोई कुछ था नहीं, बट आई वुड से कि आप लोग कम से कम यहाँ तक कर, एक और स्टेप, कुछ और चेंजेस हो रहा है कि नहीं, कुछ मल्टीप्लाई के साथ आ रहा है कि नहीं, बिकॉज वंस यू गेट द डिग्री अलोन, द हाईएस्ट ऑर्डर अलोन, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। अरे बहुत एक सवाल दिया था, ये जैम का आया हुआ सवाल है 2006 में, और IAS मैथ ऑप्शनल में भी आया है। क्वेश्चन इज प्रीटी इजी, व्हाई dy dx होल टू द पावर -1 एंड y dy dx होल टू द पावर n, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? ये -1 है, दिस इज -1 एंड दिस इज n, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस? क्या है? ऑर्डर तो 1 है सर। और डिग्री m plus n, this is a minus, it goes down then go up, directly it adds up, okay. Can you tell me what is this I'm talking about here? This is actually a subtangent equal to subnormal, है ना? Subtangency and subnormal, if they are equal to this thing, then only we can say it. Subnormal होता है YDS, okay. Subnormal is not the Hindi one, okay. You didn't get the joke. Subnormal माने सब कुछ नॉर्मल है, वो वाला नहीं है, सब नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल वाला। So when you don't get a joke, then who gets the punch?
person who says it or the person who didn't get it? I would say, well, the scenario gets the punch. Because someone who tells you the joke, he wants you to smile. So he's trying to make you smile, which is very important. Okay. So who does a little bit of extra step to do it? It's not very easy to be funny. So that's why बचपन से मैंने यही कोशिश किया, even not the bad joke, you always should be smiling, no matter what. है ना? क्यों? ना सब टाइम ये सब ना. Okay. So next day I will be working with 6 principles of special differential equation. So आज इस पार्ट के ऊपर हम लोगों ने काम किया है, and I will be sharing you the book of the Rai Singhania today. अगर किसी को ना मिले तो WhatsApp कीजिए at 90623-951. Any questions? Okay. इस क्लास का रिकॉर्डिंग कल तक आपके WhatsApp में डायरेक्ट चला जाएगा.